चलो, so we'll start the thing. Spring force. Spring force. So what is spring force? कैसा है, क्या है? We'll see. Okay. चलो, keep reading. Spring force. So what is the spring force? Spring force means whenever spring को, when you elongate or compress with an x distance, okay, then the force is acting on the spring. That is called as spring force. Okay. So देखो spring का, if I take, this is the normal position of the spring. This is the normal position of the spring. मतलब without elongation. Without elongation, this is the normal position of the spring block. Now क्या किया? I elongated from the equilibrium. This is called equilibrium position, where net force is 0. There is no force acting on this spring at the time. I elongated from the mean position through an x distance. Then क्या होगा? Force will be acting in the left side direction. I am displacing right side. The force is acting on the left side, right? That force is called spring force. And similarly, when I compress, this is equilibrium position, I want to compress the block, then force is acting in the opposite direction. That means force and displacement are always opposite direction. This is equilibrium position. I am elongating x distance. I am compressing x distance. दोनों में observed, the spring force is always opposite direction to that of displacement. Okay, that's why spring force का formula है. What is the formula? Spring force का formula is F equal to minus kx. Minus is what? The force and displacement are in the opposite direction. That's why this is a formula for spring force. I called FSP. Spring force बोलते हैं, FSP बोलते हैं. Minus kx. Okay. Now, when you're doing numericals, no need of putting minus. Minus निकाल दो. We are putting a direction, right? Displacement का opposite direction लगा रहे हैं, so no need of putting minus and solve करने का. So first formula we learned, spring का F is equal to minus kx. So spring force is opposite to what? Displacement. Okay. Displacement of the particle. Yodesh, why late? Late क्यों आ रहे हैं? जल्दी करो. Spring force we started. Spring force का formula है F is equal to minus kx. On the video, Jyotish. Okay, chalo. Now by using this formula, we have to solve the numericals. F equal to kx. Okay. Minus don't put. Chalo. इसका बोलो. And here, what is x? X is what? Displacement from mean position. From mean position. Displacement from mean position, or I can call net elongation. Net elongation, or I can call elongation or compression also, right? Net compression. This is the original direction, original spring है. I elongated the spring block, spring and block है. I elongated right side. The force acting in the left side. Spring को कभी भी ऐसा खींचा. If I leave, what will happen? It will come back, right? Some force. So that means here I observed force and displacement are in opposite direction. When I compress also, when I compress, I observe the force and displacement are in opposite direction. That's why here minus आएगा. F equal to minus kx. And k is what? K is called as? What is k is called as? Spring constant. What is spring constant means? No, spring constant. See, name is spring constant means constant value रहेगा. हर spring का एक k value रहेगा. So this is nothing but stiffness. अगर k is increasing, what will happen? The spring stiffness will increase. उसका वजह से क्या होगा? Length क्या होगा? Decrease होगा? Increase होगा? If I elongated the normal two springs are there, एक का k value is less, एक का k value is more. I applied same force in both the springs.
Which one will elongate more? Which one will elongate more? There are So two the one with springs. less Longer K one. will have more elongation. Less K will have more elongation. Okay. K1, K2. K2 is suppose greater than K1 means this will elongate more. So less K, more elongation, length का. Okay. So first formula we learn F equal to KX. खलास वो formula use करके solve करने वाला है. Okay. चलो. Now numericals करेंगे. उससे पहले one question. Two persons are there, Rahul and Sachin. Initial length is L0. Initial length is L0. He elongated x2 distance. He elongated here x1 distance. Can you tell me when he elongated like this, the FSP is acting like this, FSP. And when he elongated like this, the FSP is acting like this, right? Can you tell me what is the force? FSP force is how much? Spring है. I elongated x1 distance. That person elongated x2 distance. I want FSP1, FSP2. कितना होगा? FSP1 कितना है? FSP2 कितना है? इसके he from this equilibrium position, how much he elongated? X2 distance. So what is the force? What is the force formula? बोलो. So FSP1 will be the KX2 and then FSP2 KX2 will be and here KX1. minus आएगा ना? Minus KX1. So you Okay, said which you is can wrong. put minus now, sir. हाँ, न्यूमेरिकल में करने समय माइनस ना करेगा, बट विच इज मेथड इज रॉन्ग. आपको x क्या है? नेट एलोंगेशन यूज करना पड़ेगा. नेट एलोंगेशन. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x1 plus x2. So answer is क्या आएगा? k times of x1 plus x2. And you know, since देखो एक रस्सी है, टेंशन इज सेम, राइट? सेम वे एक स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, टोटल एफएसपी सेम. ऑलवेज स्प्रिंग में इधर FSP1 FSP2 नहीं है. टोटल स्प्रिंग में FSP1 is equal to FSP2. So this is answer. Net elongation यूज करने का, this is the important thing. एक का नहीं है, and same force will be acting total spring में. Like tension से always compare with tension. Okay. Same रस्सी में same tension रहेगा, same FSP रहेगा. FSP is spring force. Okay. चलो ये करेंगे. So the answer for both will be just K into X. X1 plus X2. X1 plus X. Net elongation we should take. Okay. चलो हाँ करो. See, initially spring is there, mass M is there. I put like this my hand, मैं पकड़ के रखा. When I leave, what will happen? The spring got elongated to x distance and इधर stop हो गया, इधर रुक गया, ऐसा रुक गया. In that condition में is telling find the displacement x. Displacement x. He has given spring constant k value is given spring का 2 into 10 square and units are Newton per meter. Okay. Now try to calculate x value चाहिए. Spring initially mass m is there. What will happen after धीरे after certain time के बाद the spring force is equal to mg force, right? After it is reaching equilibrium here. At that time is saying to find x. Find करो. And mass of the block is 1 kg. माना करो, क्या देख रहे हो? No, sir, I'm thinking what I have to take I have to take it as 2x or just x because of total spring. This is the equilibrium position, right? After if I leave धीरे what will happen? Slowly if I increase, the spring force will increase. एक certain stage में upward force to downward force. Equate that one, try to get x. 0.05. We'll see. Sir, in decimal or fraction? Decimal. Sir, 1/20. I don't know if that's 0.05. 1/20 में 0.05 means 1/2 करो. 1/2 is how much? 0.5, right? So by 10 means yeah. 0.0. Okay. Now देखो इसका Almost done. how much चल रहा है? प्रणव आपका कितना? Spring after reaching to the equilibrium position, upward force equal to downward force.
So FSP is equal to mg. So FSP is kx, right? No need of putting minus. Opposite direction laga raha na. This is the FSP, right? So kx is equal to mg. So x is equal to mg by k. Substitute the values. That's it. M value, g value, and k value. Substitute. You will get the displacement That's from the 0.05. equilibrium position. Tell me. Kitna? Yeah, sir, I got 0.05. Yes. So it is 0.05 meters. The answer. Okay. So spring को सिर्फ एक kx is a formula. Spring का कुछ नहीं है. Kx is a formula. Okay. चलो. आना करो. And he's telling what is the reading of the spring balance in the following device. Spring balance measures what? Wait. No. मतलब cut only. Weight is nothing but Normal. force only. Right? Tension. In this case में tension always. Okay. And a massless spring है. पूरा wire and spring में tension same है. Okay. So simply try to find tension. That is a reading. Okay. Sometimes our options may they'll give mass. So that time we have to convert by, if you divide by g, because weight aayega na, weight you will get. If you divide by g, you will get mass, right? So mass find karne ka after getting the weight. Okay. Try. So can't we just use the formula T is equal to M1 M2 by M1 plus M2G? Use karo, whatever you want to do. One pulley, 2 blocks is there. नहीं है ना? One pulley, 2 blocks is there. 2 M1 M2 by use कर सकते हैं. 2 pulley है ना? I use the freeboard diagram and complete wire में tension is same. A massless spring है. Total tension is same. So simply try to find tension. So should we take the mass as total mass or individual? Individual only. So I have to solve separately for tension for 10 kg and tension for 20 kg. See, you have to understand. This is a massless spring here. Total portion. Yeah. Here total tension same rope. So tension is same everywhere. Yeah. Okay. Now reading of the, matlab he is telling to reading of the spring balance means tension find karo. That's it. When you go in a fruit market mein, when you put a spring balance, they will measure suppose. Won't it just be this thing? What? Tell the answer. Try to do until answer. 100 newtons for tension. No, wrong. Sir, How much? 400 by 3. See, वो करो बोलते हमने शॉर्टकट्स यूज किया तो नहीं आएगा मानो. फर्स्ट डू द मेथड करो. व्हाई आर डूइंग शॉर्टकट्स? देखो हियर व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? 200. 2g 20g. Okay, ऊपर टेंशन T. And since this weight is more, a acceleration will be like this downwards. Downwards, yeah. So ऊपर tension. A वाला T. And this is This is not. 10g and ऊपर acceleration. Now Yeah. apply equation of motion. मतलब net force equal m में लगा के solve करो. So you'll likely get if use T is equal to 2 M1 M2 by M1 plus M2G. और try करके देखो एक बार. See, whenever generally pulley and 2 blocks should be there, right? Then that formula will be valid. But एक बार check करो इसमें आएगा कि नहीं है. Maybe same acceleration, same tension, right? Maybe आएगा. Check करो. 2 M1 M2 by tension. 2 M1 M2 by M1 plus M2. So you'll get 40 400 by by 3. 400 by 3 you'll get. 2 So 2 M1 into 10 into 20 into 10 also, right? 2 M1 M2 into G. into 10, right? Yeah. So 400 by 3, yes, correct. मतलब indirectly same tension is there. That's why we are using the same pulley and the Only same, tension same is formula. different. We can't use others. We can use, right? Now tell me, mass from that, can you tell me? Options sometimes they'll give mass. How to get mass from this? You got weight, right? Tension is nothing but weight. So how to find So mass? divide by acceleration. Divided by g. Khatam. So mass is equal to force by mass, right? Force by g. So कितना होगा? See, this is nothing but w mg, right? So g से divide करो. So m is equal to 40 by 3 is the answer. kg is the answer. Sometimes, see, spring balance measures tension force always, but sometimes options may they'll give mass.
आपको आंसर आने के बाद डिवाइड विद जी, यू विल गेट द मास. समझ में आ रहा है? So that's the mass of what? हाँ, स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स मास indirectly. समझ में आ रहा है? इफ यू गो फॉर ए फ्रूट सेलर, दे विल हैव ए स्प्रिंग बैलेंस. देखा होगा ना आउटसाइड. इफ यू बाई एनी फ्रूट्स ऑल्सो, द फ्रूट सेलर क्या कर रहा है, सिंपली ऐसा हाथ से पकड़ेगा, स्मॉल स्प्रिंग बैलेंस विल बी देयर, ही विल पुट द फ्रूट्स, ही विल मेजर डायरेक्टली केजी मास आ जाएगा डायरेक्टली, उसका रीडिंग विल बी द But मास. in that case, shouldn't we divide it by acceleration? हाँ, Because वो उसके अकॉर्डिंग ओनली द स्केल इज मेड. ओके, सो दैट उस टेंशन नॉर्मली आपको आंसर क्या है, एनीबडी आस्क सपोज व्हाट द स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स मींस टेंशन. ओके, ऑप्शंस में if they given masses divide by g to get mass. sir, why Okay. G, sir? हाँ, Sir, वेट का shouldn't it फार्मूला be इज वन. acceleration? Sir, but वेट it's measuring along the, sir, we're taking all the components along x direction. इसमें ना हाँ. वही एक्सट्रैक्शन, ये नेट फोर्स इक्वल एम ए लगा रहना इधर. No, sir, for the spring balance, అవును so the weight that it's measuring is basically tension, which is acting along the x direction. So అవును. shouldn't we also take the acceleration along the x direction to find the mass? नहीं नहीं, उतना कॉम्प्लीट मत करो. ये दिस साइन द टेंशन इज सेम ओनली, इनडायरेक्टली यू कैन रिप्लेस विद द टेंशन ओनली. स्प्रिंग बैलेंस मेजर विद टेंशन ओनली ऑलवेज. अगेन उसमें करके आपको फाइनली क्या आया था, आपको वेट आएगा. टेंशन इज नथिंग बट वेट ऑन, राइट? mg, w को mg आएगा. सो दिस नथिंग बट टेंशन, राइट? टेंशन इज नथिंग बट Okay. वेट. आपको कितना टेंशन लग रहा है उतना वेट आपको दिखेगा, डिवाइड बाय जी करने का, दैट्स इट, कुछ नहीं. ट्राई करो. दिस इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. उसको मैं इधर से 0.3 खींचा. ही सेलिंग फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट द मोमेंट व्हेन इट इज रिलीज्ड. आस्किंग एक्सेलरेशन. फाइंड करो. इन टर्म्स ऑफ मास में आएगा आंसर. So over here, does the K mean the actual K? No, right? हाँ, के ओनली. के कितना दिया, 20 न्यूटन पर मीटर इज गिवन, राइट? So the K is a constant only, right? हाँ, के इज कांस्टेंट. वन स्प्रिंग इफ यू कीप देयर, द के इज कांस्टेंट. So they didn't give the mass, so we'll get in terms of mass only, right? Yes, mass only. So it's saying to find acceleration of the block when it's released from the position. So when I am elongating like this, there is a force acting FSP in the backward direction. So you can use that formula and solve. So FSP ka formula is Kx. So what is mass, sir? M only. Okay. K in delta x. And So there is we nothing give but acceleration as 1 by m. yes, correct. So K in delta FSP find karo, Jyotish. FSP find karo. It is K is 20 into But delta is x. Delta x is 0.5. 0.05 ना? 0.05. हाँ. Now FSP आ जाएगा. One. And So we acceleration get will be 1. FSP by mass m. So So it we is get acceleration as 1. acceleration is 1 na? Yeah, 1 by m, right? 1 by m you will get 5 by 100, right? So 20 into 5 by 100. So कितना होगा? 1. So now it is 1 by m. FSP is 1. When you divide with mass, you'll get acceleration. Okay. Next. स्प्रिंग नॉर्मली पेन में खेलते हैं ना, वो स्प्रिंग है. स्प्रिंग एलोंगेट करो, कंप्रेस करो, एफ इक्वल के एक्स यूज करने का. हाँ, करो. इजी क्वेश्चन. Force constant is nothing but spring constant only. K. Natural length is 2 meters. He's asking find the spring force in the following situations.
Sir, over here they didn't give the direction of the constant, right? Direction of constant. Which constant you want direction? Here, Oh, spring never mind. constant is spring. No, no, you take positive only, no. So do we consider the sign for minus kx? No need. Just So then direction what लगा is रहा. the same answer for Same A? answer will get. Yes. And C में? So I didn't see it. Yeah, correct. Pranav बोलो. A is at rest and B is displaced by 1 Sir, I meter. got A and B as the same. Sir, Oh, yeah, same, 7. same. I got A and B as same. No, Sir, C and करो. C I got 100. देखेंगे. So Hmm. for C also I'm getting 200. Sir. Yes, C also getting this 200 is answer. Because आपको नेट एलोंगेशन लेने का, आप ये वो करो, आप ओरिजिनल लेंथ से कितना भी खींचो, नेट एलोंगेशन वी टू ऐड. So FSP is how Sir, much? but should we take won't 0.25 be minus? No, माइनस नहीं करने का. आपको फॉर्मूला में टोल्ड यू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स बोले तो माइनस ऑलरेडी ऑपोजिट डायरेक्शन बोल के लगा रहे हैं. एक्स इज व्हाट? एक्स इज द नेट एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन शुड टेक. आप कितना स्प्रिंग ओरिजिनल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना खींचा. देखो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड खींचा, बट टोटल नेट एलोंगेशन विल बी 1 only, right? So it is 200 into 1. So it is 200 newtons. In all cases में 200, 200, 200. समझ आया? Jyotish understanding? Yes. Next, ये करो. Find the acceleration of 3 kg block when the acceleration of 2 kg mass is moving with acceleration this much. So this is moving with 2 meters per second square. When I applying a force F, that time is asking what is the acceleration of this block. So when I am applying a force block को इस तरफ खींच रहा हूँ, so FSP is acting like this. So 14 by 3. FSP is acting like this. Answer is 14 by 3. acceleration, no? So first net force equal to ma लगाओ, FSP find करो. And here again use FSP equal ma, आ जाएगा. So can we draw free body diagram of 3 kg, 2 kg and compare? Yeah, compare बोलता हो. देखो net force here FSP कितना, net force equal ma लगाओ फर्स्ट में. So you'll Sir, get we'll get 14. कितना? 14. इस FSP here कितना होगा then? Then 14 by 3. देखो what is the acceleration? 10 minus FSP is equal to ma, right? So 4. So 14 10 minus 4 is 6, right? Sir, why would it be 10 minus FSP? Oh, okay. Okay. Basic one. Got it. Net force. So FSP you got 6 newtons बोल के. Now in this में free body diagram में net force equal to ma. So so you'll get FSP 2. Mari, that time FSP is equal to ma 3a. So this is 6 by 3 is equal to 2 meters per second square. मतलब if I pulling with 2 meters per second, ये भी 2 meters per second square जा रहा है. अंडरस्टैंडिंग? चलो देखते हैं. दिस इज जेईई मेंस क्वेश्चन, ट्राई करो. स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगा. I'll give options also.
डायग्राम ड्रॉ करो. So will the spring, never mind. So, gravity we should take as 10. 9.8. No, it doesn't mention, right? मतलब It's अगर 9.8 because it will be divisible by 49. डिसीजन कर सकते हैं, बट मैच हो गया तो हो गया. डोंट मेंशन, यू कैन टेक 9.8. So over here, will the G effective is good downwards, right? So it will be G minus A, right? फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस. रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस दे गिवन न्यूटन, राइट? मतलब टेंशन फाइंड करो, खत्म. Sir, I got a 24. ओके, देखेंगे. स्प्रिंग बैलेंस अटैच टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट. तो एक पुली है. ए मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग. ओके, पुली से इधर स्प्रिंग बैलेंस इज. Yeah, so 24. इसमें मास है, मैं देखेंगे उसको भी. देख, मास से अटैच्ड है, and the lift is going downwards with acceleration of 5 meters per second square, and spring reads 49 newtons indirectly. मतलब FSP reading is 49. नो सॉल्व करो, कितना आएगा? कितना आएगा किसान? Sir, I'm not getting it. See, first initially, see question समझ में आया. Spring balance is attached to the ceiling of the lift. Spring balance attached किया ceiling में. A man hangs his bag on the spring and spring reads 49 newtons. So spring at the time initially before moving, the spring is reading 49 newtons. मतलब what is given? Tell me. FSP is nothing but 40, right? Because before it is moving, after reaching the equilibrium, the upward force or downward force, FSP equal to mg, its value is how much? 49 newtons. Right? This is the reading of the spring balance initially. Now from this, can you tell me what is the mass value? Mass value is how much? 49 by 9.8 is how 5 much? kgs. Is 5 kgs. 5 kgs, huh? 5. Okay. Now what is saying? If the lift moves downwards with acceleration, now lift is moving downwards. Now apply net force equal to ma. Net force equal to ma lago. Net force mg minus FSP is equal to ma, right? So mass into acceleration is 5. Now solve and try to find the reading means FSP find करो. कितना होगा? So 24. So 24 is answer. 24 Newton is answer. Hi Krishna. Yes. चलो. Now we'll go string cut वाला एक क्वेश्चंस करने वाला है. String cut and spring cut वाला. Okay. मेथड मालूम है? Tell me what is happening spring cut and string cut में. मानो बोलो. String cut में and spring cut में क्या तेड़ा है? What you done the questions में? Tell me. Sir, I took it as the same. You took as same? Yeah. No, wrong. Like sir, Check. basically if the string is cut, all of the spring is cut means the force acting on the bottom will be 0. देखेंगे. देखो string cut problems का जो देखेंगे. Suppose two blocks are there, A and B, of equal masses, of same masses attached with the light string of suspended spring. Spring के साथ attached है, A string है, ऊपर ceiling से attached है. Find the acceleration of the block A and block B just after string is cut. This all things we are seeing just after string is cut. कौन सा cut है? String is cut. Okay. See, whenever string cut or spring cut में understand करो. First, these are before cutting, it is reaching the equilibrium, right? It is reaching the equilibrium position. So first write the forces acting on it. Tell me what are the forces acting on it? Downwards is mg. ऊपर कितना है? FSP. That is equal to mg only. Because these are equilibrium. Upward force is downward force, mg only. Okay.
Now this also either also FSP. That is how much mg. And here gravitation force mg. Now mg plus mg इधर क्या होगा? टेंशन कितना होगा? 2 mg. Always try to write like this. Always. Almost 90% solve हो जाएगा अभी. Yeah. So whenever the mass is in equilibrium, always try to apply the forces mg fsp. Fsp is equal to mg only. Upward force, downward force, equilibrium है ना. And I told you this is a massless spring. पूरा wire में fsp is same. fsp mg 2 mg है. इधर तक आया? Okay. Now क्या किया? String is cut. Whenever string is cut, tell me. उसमें क्या होगा? टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन विल बी 0. Whenever string is cut, टेंशन नहीं रहेगा. कट कर देते क्या हो? टेंशन, नो टेंशन. Now find acceleration. Acceleration of A and acceleration of B. Sir, A will be minus G down. Net force equal ma लगाओ, खत्म. Net force. Net force is how much? ऊपर तो 0 है. So mg plus mg 2 mg. Net force is 2 mg is equal to ma. M into acceleration of A. Right? mm cancel. So A is how much? 2g. समझ आ रहा है ये वाला? Now try to find AB का. AB का find करो. AB का कितना है? नेट फोर्स इक्वल एम देखो. नेट फोर्स कितना है? mg minus mg is Yeah, 0. 0. So acceleration of B is 0. 0. That means it is moving with constant velocity. से गिर रहा है, गिर जाएगा. खत्म सिंपल. So string cut किया तो always remember tension will be 0. कौन सा पोजीशन में स्ट्रिंग कट किया उसका टेंशन 0 रखो and find No, out. no, sir, for the acceleration of A, won't it be mg plus mg minus 2 mg? See, string कट कर दिया ना, tension is Yeah. 0. See, normal life में if I cut this thing, any tension the But rope why में, will the top part be 0? Oh, never mind, understood. तो मैं ऊपर कट कर दिया ना, उसमें 0. That tension is okay. हाँ. कब बेटा? Sir, why did you take 2 mg is equal to ma then? 2 mg is equal to Okay. this one ना. Never mind. हाँ. Okay. Got it. तो मैं ऊपर कट कर दिया, only this mg plus mg 2 mg इक्वल है. ज्योतिष बात करने का, if you silent कैसा टेल में? हाँ, टॉक करो, आंसर्स दे दो. रॉन्ग और रॉन्ग नो प्रॉब्लम. टेल द आंसर्स. ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द क्लास. ओके, चलो नेक्स्ट ना करो. 2 blocks are there of same masses, freely suspended by the spring. Find the acceleration of block A, block B just after string is cut. See, after certain time के बाद acceleration will change, but just after cut चाहिए. Now try. Sir, can you go backwards? Sir, why is acceleration of P 0? Net force is how much? mg minus mg equal to ma. mg minus mg is how much? Okay, Zero. we're taking friction also. Sorry, Friction, spring force also. See, Sir, why are we taking spring force if it's cut? spring Won't force it is like come? Sir, why are we taking spring force if it's already See. cut? initially it is there. देखो, initially it is equilibrium, right? It is not moving anything. It is equilibrium. That's why I added all the forces. ये तो समझ में है ना पूरा? Yeah. Now string is cut. String is cut at the just after string is cut. Within fraction of seconds में कितना acceleration है? I'm asking, right? So इससे कुछ effect नहीं होगा initially. वो string दूर है ना, वो ये इसको नहीं मालूम. वो थोड़ा नीचे आने के बाद spring compress होने के बाद then it will change. So spring force will not change. Always याद रखो. Just after cutting I'm saying. Okay. So that's why just they will mention. Right. Here also just after string is cut, find the acceleration of A and B. So what are the forces acting on it? Downwards mg. So for A will be 2G. No wrong.
डाउनवर्ड्स mg फर्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आओ ऑलवेज mg ऊपर टेंशन t So string is cut or spring is cut? string only string is cut Oh. okay So string now is cut means the bottom line between A and B, right? string okay this is equal to mg only and here t is equal to mg and mg So won't it just be G? yes correct fsp So is for equal to A will be G up and for B will be G down. yes correct देखो फर्स्ट इनिशियली ऑल फोर्सेस को लेके आया पूरा इक्विलिब्रियम में नो क्या किया स्ट्रिंग को कट कर दिया स्ट्रिंग को कट कर दिया ठीक ठीक व्हेनेवर स्ट्रिंग को कट किया तो टेंशन जीरो हो जाएगा नो डेफिनेटली ये तो ऊपर जाएगा ये तो मालूम पड़ रहा है ना ए एंड ये तो नीचे जाएगा ए बी नो अप्लाई नेट फोर्स इक्वल जीरो देखो टेंशन इज जीरो नो ऊपर का वी शुड नॉट कंसीडर नेट फोर्स इज इक्वल टू So मतलब for हाँ mm cancel ab is equal to g which is downwards okay वो इसका देखो टेंशन तो जीरो है ना कट कर दिया ना टेंशन जीरो सो ओनली वन फोर्स नेट फोर्स कौन सा है इधर टेल में 2mg minus mg 2mg minus mg is equal to ma m into acceleration of a so it is mg is equal to m times of a mm cancel so aa is equal to g which is upwards कुछ अंडरस्टैंडिंग yes. ये वाला इसका ये वाला इसका तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग डायरेक्टली for आपको oh no, टेंशन जीरो लगाने का so can you move a little? या Yeah, so done. या डन ओके चलो नाउ स्प्रिंग कट एक क्वेश्चन करेंगे स्प्रिंग कट का हो जाएगा ओके कैसे करेगा देखो सपोज मान लो यू हैव लाइक दिस वन स्प्रिंग इज हियर एंड हियर मास m mass 2m and mass m here some spring is there okay try to neatly talk m is there this is a b c okay this is a question he is asking find the acceleration of the blocks with just after this top spring is cut ये स्प्रिंग कट करने के बाद इज टेलिंग टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द थ्री ब्लॉक्स सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड whenever spring cuts whenever spring cuts tension will change tension will change So what will it change to? huh So what will it change to? देखो when I cut the spring the bottom corresponding to the bottom वाला tension will change ये लूज हो जाएगा ना you will think when a spring cut कर देने के बाद ये tension वाला थोड़ा change हो जाएगा instant में change हो जाएगा okay so that one this sentence you understand I will tell you explain करेंगे ये वाला understood है whenever spring cut tension will change okay now देखो now what is the first method before cutting what is the first method make it equilibrium all the forces okay चलो ये वाला mg ऊपर fsp since equilibrium upward force downward force is equal to mg only so this also fsp only is equal to mg and this will be 2mg So when the spring is cut, tension won't be zero, but when string is cut, tension will be zero. tension will be zero टेंशन नॉर्मल लाइफ में देखो उतना बाहर ना करेगा नॉर्मल स्ट्रिंग पकड़ के रखा मैं कट कर दे देयर इज नो टेंशन बट स्प्रिंग का जब कट करूंगा उसके बाजू में जो भी स्ट्रिंग है
वो टेंशन लूज हो जाएगा, टेंशन विल चेंज. सो बिफोर वैल्यू टेंशन विच नॉट पुट. ओके, विल सी दैट. ओके, नाउ इधर तक आया. 2 mg, 2 mg will be, tension will be how much? 3 mg. Now this is T is equal 3 mg, and this will be mg. Now FSP is how much? 4 mg. 4 mg. So it is equilibrium first. All the forces we are putting. Okay. Then a cut करने के बाद I want to find the acceleration of C, acceleration of A, B, and acceleration of A. Okay. देखो इसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ये दूर है ना, इसका तो प्रॉब्लम नहीं. टेल मी व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा? नेट फोर्स इक्वल एम ए करो. mg minus mg minus mg is equal to m into a. So a is equal to 0. That means it will move with a constant velocity. नीचे वाला आ गया, acceleration will be 0. Okay. Now in दोनों में you have to understand, definitely these two will move with the same acceleration or not. These two blocks are attached with the string, right? When I cut the spring, दोनों will move with the same acceleration. String attached है ना initially, at the instant में the both will move with the same acceleration. Okay, that's why AC is equal to A लगा रहा हूँ, AB is also A लगा रहा हूँ. Now what I told, when a spring is cut, spring force तो 0 है पक्का, spring force 0 है, and tension will change. So मैं क्या करूँगा, मैं ड्रॉ करूँगा. देखो इधर मास M है, C ब्लॉक का I'm drawing, नीचे तो mg है. देखो ऊपर तो 0 है, कट कर दिया ना, ऊपर तो 0 है. ये टेंशन विल चेंज एट ऑल, राइट? टेंशन कितना है इधर? टी डैश मान लो, टेंशन टी डैश. ओके, हाँ. नाउ इधर भी टी डैश, बिकॉज वेन एवर स्प्रिंग इज कट ये टेंशन लूज हो जाएगा, वाइट लूज हो जाएगा, सो टेंशन विल चेंज. एंड इधर 2m ब्लॉक है, बी ब्लॉक, एंड इधर क्या होगा, कितना है? mg, 2mg, एंड हियर mg. समझ में? And both will move with the same acceleration because it is connected with the string, right? दोनों नीचे गिरने से same acceleration जाएगा. Now apply the net force equal ma, net force equal ma and solve and find the acceleration. A find करो. Net force equal ma, net force equal ma find करो. First one आपको कितना equation क्या आएगा? Tell me. First equation में कितना होगा? इसका बोलो. mg इसका नीचे है ना, so 3mg minus t dash is equal to 2m into a. Answer clear? Yeah. Bottom में 3mg minus t dash is equal to ma. M is 2m, right? 2ma. अब इसका अप्लाई करो. नेट फोर्स इक्वल ma. टेल में इसका बोल सकता है कोई? नेट फोर्स इक्वल ma लगो. mg plus t dash is equal to m into a. Now try to find acceleration. So add करो दोनों, t dash cancel हो जाएगा. So 4mg is equal to 3ma. So mm cancel. A is equal to 40 by 4g/3. 4g/3 और 40/3. So इतना acceleration से ये दोनों जाएगा blocks. Okay. See आपको first step क्या है? When string cut और spring cut, आपको all forces डाल दो. When spring is cut, डेफिनेटली उसका फोर्स तो 0 है ना, उसका फोर्स 0 है. बट वेन स्प्रिंग का इफ यू नीचे जो भी स्ट्रिंग है ना वो टेंशन चेंज हो जाएगा. प्रैक्टिकली आल्सो, मतलब दे प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली आल्सो, इफ यू कट द स्ट्रिंग विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो उसका लूज हो जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. दैट्स व्हाई आई कॉल टी डैश. ये टेंशन नहीं लेने का, टी डैश लेने का एंड सॉल्व करने का. ओके, समझ में आया? अंडरस्टूड? चलो, नाउ विल गो फॉर ए पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ले लेंगे, देन विल गो फॉर दिस वन. ओके, पार्ट्स ऑफ स्प्रिंग में यू अंडरस्टैंड k is inversely proportional to length. True or false? K is inversely proportional to length. True. I told you k is stiffness, right? More the stiffness, lesser the length खींचेगा, and more the lesser the stiffness, more the length खींचेगा, right? K is inversely proportional. Now tell me, suppose मान लो spring is there, उसका spring constant k and length l. इसको मैं half of कट करूंगा,
Can you tell me what is the length of the springs now? If I cut exactly half, what will length will be? L by 2. L by 2. Since it's inverse relation, K value कितना होगा? 2K. Increase. 2K, 2K. ये understood? Inverse relation. Now tell me, if I cut this spring into 3 equal halves, 3K. so what will be length? L by L by 3. 3. And what is the K value? 3K. 3K. 3K, 3K, 3K. इसको अंडरस्टूड करो. ये सेम मतलब स्प्रिंग का oscillation chapter also you will get detail में springs में. That time more will do, but here normally since the given topic we will do that. Okay. Now tell me, suppose मान लो if the spring को I cut in the ratio of 1:2. Spring constant K, length is L. Tell me now. दो का स्प्रिंग का कितना होगा? लेंथ कितना होगा? 1:2 रेशियो में कट किया. L by 3 and 2L by 3. L by 3 and 2L by 3, right? Now what will be the K value? 3K and 1.5K. 3K and 3K 1.5. 1.5K. 3 by 2 times K, right? These are answer. So आप कोई भी रेशियो ले लो आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट. छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स आल्सो विल डू दैट, हो जाएगा. अपना चलो. Now combination of springs. Combination. We have two combinations. One is series and parallel, right? Parallel series में करने वाला है. Okay. Anything formula you know? K equivalent कितना होगा? Parallel में कनेक्ट किया तो what is K equivalent? Suppose 1 two by springs K1 are plus 1 by K2 is But equal to but over here is reverse. no. आपको रेजिस्टेंस का उल्टा रहेगा K का. Yeah, so it will be K1 is K1 plus K2. K equal to Parallel. K1 plus K2 plus K. For parallel. पर series में 1 by K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1. Okay. चलो देखो. First one parallel combination. देखो. Suppose one this is a block. This is two springs. They connected in parallel, right? You know this one, right? Parallel. K1 K2 है. I में क्या किया? I am applying a force F. I am applying a force F. So इसके ऊपर spring force आएगा. इसका भी spring force आएगा. I can tell F equal to F1 plus F2. देखो F equal to F1 plus F2 in parallel में. And I use the formula. F के जगह में F1 के जगह में K1x, F2 के जगह में K2x, and F के जगह में K equivalent x, right? And x got cancel. So answer is K equivalent is equal to K1 plus K2. So whenever two springs are connected in parallel, K equivalent is like resistance का opposite. K1 plus K2 you have to use. By seeing you can able to identify they are parallel. Okay. There is a derivation important, or if I write the formula directly, it's enough. Formula लिख लो directly. Here what is constant parallel में here? What is constant? Over here, x. Here x displacement को मैं खींचेगा, दोनों x ही होगा, right? Forcibly I'm खींचिंग, right? I'm elongating x distance, so दोनों will be moving with x distance only. So x is constant. In parallel में elongation is same. In parallel में elongation is same. That's why here x got cancelled. X. K equivalent is K1 plus K2. So चाहे तो formula लिखो directly. That's it. Or diagram and formula. इन ऑसिलेशन चैप्टर में पूरा टाइम पीरियड बोल के पूरा क्वेश्चन आएगा, उसमें स्प्रिंग्स भी रहेगा. दैट टाइम अगेन दे विल डू दिस डेरिवेशन. डन. नो. नेक्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. देखो दिस टू आर इन सीरीज, बाजू बाजू में अटैच है एंड ब्लॉक है. आई एम अप्लाइंग ए फोर्स एफ. नाउ वेदर एक्स इज सेम in this case mein x is same? No. Why? Because based on the stiffness, one will be more elongate, one will less elongate, right? So here I can tell x is equal to x1 plus x2, right? देखो x equal to x1 plus x2 I can write. So if I use the formula, देखो x के जगह में f by k equivalent, f by k1, f by k2, f cancel. 1 by k equivalent is equal to 1 by k1 plus 1 by k2.
So here series में what is same? Force is same. देखो, how they will ask, suppose there is a spring of length L, K, of length L and K. I cut it into 3 equal halves. I cut it into 3 equal halves, and that 3 I connected with in parallel. So what is the K equivalent? He will ask. I got, sorry, my question. I cutted the spring into 3 equal halves. After cutting, I will add these 3 pieces in parallel. Then he's telling K equivalent is how much? 9K. Because when I cut here, 3K, 3K, 3K. When I cut it in parallel, so all of we should add, right? K equivalent is, so 9K. So like these small questions they can ask in the this one exam. Katam, spring force pura done. Now we'll go for pseudo force. Energy है ना, करेगा ना pseudo force? तो क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे pseudo force. No, sir, we'll complete. Sure? Pranav, pseudo force. So isn't pseudo force and minus anything? Minus everything. So after pseudo force reducing friction. How After long will it pseudo take? force reducing friction. After pseudo force we are doing friction. क्या करेंगे? करेंगे कर नहीं करेंगे? How मानो long will it take? तो टाइम लगेगा. Because from numericals are there. See, one numerical I will not do, right? I'll minimum 5-6 करेंगे. So ठीक है, next class में करेंगे शायद तो. No problem. Sir, there won't be time, sir. हमारी ये लोग हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं. How long बोले तो मैं क्या करूँ? एक क्वेश्चन करवाओ, एक क्वेश्चन करके बंद करो, हो जाएगा बोल के. Oh, try करो. I see one concept में I'm giving some more questions. I'm reducing also. Since you are telling ज़्यादा fast बोले तो I'm before थोड़ा ज़्यादा देता. I'm reducing questions. Still fast बोले तो एक क्वेश्चन करे तो बस है. मुझे क्या, मेरे तो पोर्शन पूरा हो जाएगा. So try to do Do this. 5-6 only, sir. Do now only 5-6. चलो. Then we'll go for the pseudo force. Pseudo force क्यों होगा, कैसा होगा? It depends on the frame of reference. So we have two frame of reference. One is inertial frame. One is non-inertial frame. Inertial frame means meaning क्या है? Inertial frame means सुना नहीं, frame of reference? So from where you're seeing the object moving. नहीं. Observer is at rest. When the observer is at rest, that frame is called as inertial frame. मतलब indirectly ground में. When the observer is on the ground, that is called inertial frame. Okay. When the observer is in moving frame, मतलब गाड़ी में जा रहे हैं बैठ के, मैं देख रहा हूँ, आई एम मूविंग फ्रेम में, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को वी कॉल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम. ओके, तो देखो, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब नहीं जा रहे, मूवमेंट नहीं जा रहे, द एक्सेलरेशन ऑफ द इनर्शियल फ्रेम इज 0, सो दैट इट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. सो एट दैट टाइम दैट रेफरेंस इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम. अभी तक जो भी क्वेश्चंस किया है पूरा इनर्शियल फ्रेम है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, एंड all Newton's laws of motion are valid in inertial frame. अभी तक जो भी F equal F net equal ma लगाया, the observer is at rest में. Now non-inertial frame क्या होगा? When the observer is in accelerating frame, मतलब movement है, observer is moving, at that time that frame is called as non-inertial frame. And problem क्या हो रहा है हमारे में? non-inertial frame में Newton's laws are not valid. There is a big issue. Okay. Same F net equal ma लगा के they are go on doing the numericals. At that time they found the answer is getting wrong in non-inertial frame. Okay, so Just one second. better. So instead of writing the whole definition, can we just write short form लिखो. inertial? So can we just say for inertial frame acceleration is 0? So constant velocity like that directly. लिखो short form में आपको अंडरस्टैंडिंग होने लैंग्वेज में लिखो, नो प्रॉब्लम.
गया? नो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेन एवर हियर न्यूटन्स लॉस आर नॉट वैलिड, एनएलएम न्यूटन लॉस ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, दैट इज द इशू कमिंग. इसमें जब नॉर्मली लगाता जा रहा है न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, सभी में आंसर रॉन्ग आ रहा है. देन ही दे केम टू द न्यूटन्स, रात को सो गया, they came to the Newtons, they wake up him, sir your some answers are getting wrong. बोले तो क्या हो गया बोले तो he applied the, in this example they given some examples, he applied in every moving frame में he observed the answer is getting wrong. Okay, then उसको correct करने का, that's why he has given a concept called pseudo force. तो कुछ काम नहीं है ना, pseudo force बोल के देगा. Okay, कब that's why topic name pseudo force. Pseudo force is nothing but a simply imaginary force. Or we can call fake force. मतलब वो एग्जिस्ट नहीं है, उसके ऊपर नहीं गिर रहा है. So you tell me, suppose I will example like you are doing maths, उसमें आपको you are calculated answer, answer you got as 2, but your answer पीछे आंसर देखेगा तो 4 आ रहा है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन किया, यू गॉट 6, बट पीछे आंसर देखे तो 8 आ रहा है. सो एवरी टाइम में 2 आपको ज्यादा आ रहा है. देन आपको क्या करेगा? थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम में क्या करेगा? जो भी आंसर आया +2 करेगा. ऐसे ही किया, सूडो फोर्स ऐसे बनाया. सूडो फोर्स का वो आंसर मैच होने के लिए ही अप्लाइड दैट कॉन्सेप्ट. ओके, वो लगाए तो द न्यूटन्स लॉस आर गेटिंग वैलिड इन नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम आल्सो. That's why this concept is valid बोल के he put the concept. Okay, now we'll see क्या है उसका एग्जांपल के थ्रू देखे तो समझ में आएगा. Pseudo force देखो, हाँ. now एक गाड़ी है, गाड़ी में एक fixed is there, here mass m is there, 2 persons observers are there, one is A, one is B. B is sitting inside the vehicle and the vehicle is moving with some acceleration A and observer A is there. now इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, डेफिनेटली इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. नाउ टेल मी, अकॉर्डिंग टू ए व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? अकॉर्डिंग टू ए, he is seeing the block is moving with some acceleration a. ओके, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? टेल मी, कौन बोलेगा? नॉर्मल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ए, नॉर्मल रिएक्शन कितना? नेट फोर्स इक्वल ma लगाओ, n इज इक्वल टू ma. आया ऑब्जर्व के ए के रेस्पेक्ट में. नाउ बी के रेस्पेक्ट में the block is moving with some acceleration or rest according to B? Rest. That means if I apply the concept, कितना आएगा? देखो, n equal to m into a is 0, n equal 0 आ रहा है. देखो, सेम ऑब्जेक्ट, सेम मास m, अंदर से देखने से 0 आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन, बाहर से देखने से आपको ma आ रहा है. Which one is right? Experimentally this is right. Understood? समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ दिस, बिकॉज देन ही अंडरस्टूड व्हाई इट इज गेटिंग रॉन्ग बोल के थिंक करके ही अंडरस्टूड दैट व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम, then my answer is getting wrong. Okay, that's why he introduced a concept of pseudo force, and that's why imaginary force which is not acting on a body, वो body के ऊपर नहीं आएगा, but we are putting the object force, that force we are putting. Okay, उसका फॉर्मूला देखेंगे क्या है, we'll see. Okay, but after applying it on the body, we can use Newton's law in non-inertial frame also. So always observe where the observer is there, he is inside, always apply pseudo force and then normal Newton laws of motion apply करो, आ जाएगा आंसर. Okay, चल, finished. now देखो, now apply pseudo force का फॉर्मूला है this one. Pseudo force is equal to minus ma is a formula for pseudo force. Okay, here a is what? Tell me, a is what? Whose acceleration? Observer's acceleration. Observer's acceleration. And m is the mass of the object. Mass of the object. Where you are applying the concept pseudo force, right? That mass of the object. And minus क्यों है? आपको
ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन किस तरफ है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा. ऑलवेज रिमेंबर, you always put the observer on the like in the non-inertial frame and check which direction the observer is going. उसको opposite direction में आपको MA लगाने का. So in the previous question में देखो, I'm applying F equal to MA in the previous question. देखो, according to observer B, he is in accelerating frame, right? He is in accelerated frame. That means we have to apply pseudo force. Pseudo force कैसे अप्लाई करने का? Whether the observer is going right side or left side? Right side, right? That means उस ऑब्जेक्ट के ऊपर माइनस है ना. What is the meaning? Pseudo force बैक साइड लगाने का, उसका ऑब्जर्वर का ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. MA लगाने का. भाई मास इज M and acceleration कितना जा रहा है? That acceleration you have to put here. MA. Now apply. Tell me net force equal to MA लगाओ. Now according to him the object is rest, right? That means this is equilibrium. This side force equal to this side force. Equate करो. N is equal to MA. देखो, we got the before answer. देखो, N equal to MA. Pseudo force लगाने से non-inertial frame में answer is getting same. समझ में आ रहा है? So आपको when we have to apply, whenever the observer is in accelerating frame, आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका जो एक्सेलरेशन है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में MA बोल के लगाने का. M इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी मास है उसका इनटू एक्सेलरेशन करने का अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, क्वेश्चन के थ्रू लर्न करेंगे. थोड़ा पेशेंस चाहिए. नींद आ रहा है ज्योतिष आपको? गेटिंग स्लीप? नो, राइट? क्या सर इतना टाइम ले रहे हैं बोल के? दे हैव एग्जाम्स मंडे. वो फ्रिक्शन क्या फ्रिक्शन में कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं मालूम, फॉर्मूला नहीं मालूम. लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके चलो, नो प्रॉब्लम, विल सी. चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे, समझ में आएगा. माना रेडी है? यस, चलो नो करो. देखो, एक पर्सन है, कैपिटल M पर्सन इज देयर. ही इज ऑन द वेइंग मशीन में. ओके, द लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स. नाउ ही इज टेलिंग calculate the reading of weighing machine according to B and according to A. Weighing machine. The B is in non-inertial frame. At that time आपको क्या करने का? You have to apply pseudo force. Pseudo force नहीं लगाए तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. करो. So according to A करो first. According to A, what are the force acting on it? One is mg, one is normal reaction. And according to A, the person is moving with some acceleration A direction. Now apply net force equal to MA. Net force कौन सा आएगा? N So shouldn't you minus add the mass mg. of B also? क्या? Shouldn't you add mass of B? मास ऑफ बी नहीं है. मास ऑफ बी इज जस्ट ऑब्जर्वर, उसका यूज नहीं करने का. ओके, विच ऑब्जेक्ट के ऊपर यू आर अप्लाइंग दैट ऑब्जेक्ट ओनली वी हैव टू पुट M. ओके, सो N minus mg is equal to MA. This is a normal thing we done, right? N is equal to कितना आएगा? mg plus MA. Sir, won't it be ulta? What? According to A, I'm telling. Okay. See, Okay. according to A, he is at rest. Normal Newton laws of motion we are applying. Yeah. Now our thing is B. Now देखो, B is moving upwards, right? So आपको before applying Newton's second law, आपको क्या करने का? उसका acceleration opposite direction में लगाओ MA. Right? Since he is going upwards, उसका उल्टा लगाओ. Pseudo force is minus, right? Minus is nothing but उल्टा. उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर उल्टा लगाने का MA. Now tell me, now apply Newton's. According to him, the object is at rest, right? According to him, the object is at rest. That means upward force equal to downward force. Upward force is how much? N is equal to MA plus mg. देखो, दोनों में सेम आया. अगर pseudo force नहीं लगाए तो N equal to mg बोल के लगाएगा. आंसर इज रॉन्ग. So pseudo force लगा के whenever observer is in non-accelerating frame, then always use the pseudo force and then apply Newton's laws of motion. मानो on the video. देखो, ये फेमस क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा आपको. नेक्स्ट मॉडल में आपको एग्जाम में मंडे पे आएगा. देखो, एक गाड़ी है मूविंग विद सम एक्सेलरेशन. ये ओके, एक पेंडुलम क्लॉक है. इनिशियली इट इज हियर, ऐसा ऐसा. ओके, व्हेन द बॉडी इज मूविंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, सो ये मास M का
इस बॉब केम लाइक दिस एंड स्टेबल हो गया, उधर रुक गया, राइट? एक पेंडुलम है, व्हेन इज गोइंग विद सम एक्सेलरेशन उधर जाके रुक गया. So Now for the question second is, one, T cos theta will be mg and T sin theta be ma. is telling what is the acceleration of the trolley. Now tell me. And if the trolley, Will you the get an string actual makes value or will you get in like I want value चाहिए. can I give options? नहीं. Here the given values are mass also given, right? Use करो and solve. So solve by दो मेथड में, एक इनसाइड एंड आउटसाइड मेथड में. ऑब्जर्व इनसाइड और आउटसाइड दोनों. I got 7.5. Which one? No, The observer wait. is on the 7.5, yeah. outside. You took or inside? Sir, I just what I did was I wrote T cos theta as mg, T sin theta as ma. Then you get tan theta as a by g, and you get a as g tan theta, theta 37. I substituted. Okay, that is the observer A can. Sir, even our school teacher did this question before. So I Okay, remember. देखो ये A के respect में you are doing that one. Okay, now the observer is inside the frame of reference. Now do. Now apply the pseudo force and solve. A का आगे आपको कृषा A का भी. So you get A is equal to G tan theta. If you take the guy inside the block, inside the inside the ना आंसर दोनों में सेम आएगा. वैल्यू चाहिए नंबर. so G will be 10. The 7.5. that is right only. Now B के respect में करो. So The 7.5 only. 7.5 only, but better किया that same Yeah. answer will. Then you'll just put accelerator. हाँ देखो ऑब्जर्वर इज इन द राइट साइड, राइट? उसके ऊपर क्या लगाने का? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एम ए लगाने का. खत्म. इधर टेंशन टी है, दिस इज थीटा, सो टी कॉस थीटा एंड ये वाला टी sin theta, and downwards is mg. Now according to B the object is at rest, right? So simply equate upward force, downward force, this side force equal to this side force. If you equate and divide किया तो answer acceleration is 7.5 meters per second square. ये एग्जाम में आएगा. दिस मॉडल इज कमिंग फॉर एग्जाम. कंपल्सरी पेंडुलम जाके रुक गया, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछेगा. ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा. So for this question, should we apply? इनसाइड वाला. सी आपको एनी मेथड यू कैन अप्लाई एक्चुअली, बट प्रॉब्लम क्या है, सम क्वेश्चंस में आपको इफ यू डोंट पुट ऑब्जर्वर इन द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, आपको क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. नो देखो इस क्वेश्चन में आप बाहर से देखने से आपको दो एक्सेलरेशन दिखेगा. अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, दिस m2 is coming down, m1 is going up, and the lift is also moving up. आपको दैट टाइम न्यूटन लॉस ऑफ मोशन अप्लाई करना डिफिकल्टी हो जाएगा. दैट्स व्हाई कंपल्सरी लेना पड़ेगा इनसाइड. ऑब्जर्वर को आपको लेना पड़ेगा. एक क्वेश्चन के थ्रू ओनली विल अंडरस्टैंड व्हेन आई शुड टेक ऑब्जर्वर. आप सोचेगा कि ऑलवेज मैं दूर से देखूंगा, ऑब्जर्वर से करूंगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में. सो ट्राई टू टेक इनसाइड ऑब्जर्वर एंड सॉल्व. हां सॉल्व. So want to get m1 plus m2g divided by like m2 minus m1 g plus a divided by m1 plus m2. हां सूडो फोर्स अप्लाई करके करो. सूडो फोर्स अप्लाई करके करो. देखो अकॉर्डिंग टू ए ऑब्जर्वर आई एम सीइंग, मतलब ऑब्जर्वर को मैं इनसाइड लगा है, उसके अकॉर्डिंगली आई एम कैलकुलेटिंग. ओके ही इज टेलिंग फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द m1 m2. ओके सो हियर एक्सेलरेशन ऑफ m1 का इधर ए मान लो, इधर ए मान लो. सी ए इज डिफरेंट, ए नॉट इज डिफरेंट. So will Okay. you get it in terms of A naught? In terms of a and a naught. Okay. That's right. Now tell me, the initially observer is going upward direction, so he's in non-inertial frame. आपको क्या करने का? First, before applying Newton's second law, you try to put pseudo force, which is exactly opposite to the both masses. So क्या होगा? m2 a naught, because observer acceleration is a naught, right? उसका opposite direction में लगाने का. ये वाला m1 a naught. Okay. नोट लगो, इधर टेंशन टी,
A tension T. Now apply net force. According to this, according to the person, the lift is at no constant rest में है. Only he is seeing the mass is moving downwards acceleration and now apply net force equal m है. कितना होगा? So T, sorry, m2 a naught minus T is equal to m2a. And similarly, according to this person, the acceleration, the mass m is moving upwards, right? So क्या आएगा? T minus इधर भी m1g आएगा. ये भूल गया ना? m2g भूल गया ना? देखो Sir, और m2g है ना? M2 देखो Sir, इधर m2g है. 1 मिनट. इधर m1g है. नोटल में इसका कितना आएगा? m2a naught plus m2g is equal to m2a minus t is equal to m2a. क्या आया इधर तक? सो देखो डाउनवर्ड फोर्स माइनस t is equal to m2a. सिमिलरली इसका कितना होगा? t minus m1g minus m1a naught is equal to m1a. Any doubt here? Okay. So if you solve here, you will get the acceleration. If मतलब values में दिया तो आपको easy हो जाएगा और भी. Okay. ये मेथड इधर तक डाउट है कृष्णा तल में? No, sir. हाँ. So acceleration कैसे आएगा? हाँ. If you solve, you will get the. If you add also tension निकल जाएगा. If you take common, you will get acceleration. But we can directly use also formula. Formula क्या tell me? इधर. What is the formula? Shortcut formula? A is equal to m2 minus m1 g divided by m1 plus m2. हाँ. But इसमें same answer आएगा. No. नो. उसमें क्या ऐड होगा? G plus A naught ऐड होगा. G plus A naught. So what is the formula? डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? m2 minus m1 into G के जगह में G G plus A naught by m1 plus m2. This is after solving you will get this answer. ये आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा pseudo force का. समझ में आ रहा है? Because the lift is moving. If there is no lift is not moving, then this answer is right. Normal G का आएगा. But lift is also moving. We are applying pseudo force. That's why G plus A naught. If you solve, you will get the same answer. Yeah, got it. Sir, So if then- it's moving down, it will be minus A naught. But what? It is going down means आपको सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर pseudo force ऊपर लगेगा. M1 A naught will be Minus. upside. माइनस नहीं. मतलब In इधर the formula. इक्वेशन फॉर्म करने समय आपको डिफरेंट आएगा. ओके. Okay. समझ रहे हैं? हाँ. सो ऑलवेज मेथड से करो. इन नॉर्मल लाइक यू नो pseudo force कॉन्सेप्ट में मेथड से करो. जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा. ओके. ठीक है. मतलब हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द फ्रिक्शन.